नमस्कार. आज जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त आपण हे जे सेशन्स घेत आहोत. आज आपलं 4थं सेशन आहे आणि आज आपले प्रमुख पाहुणे आहेत IIM दादरचे प्रिन्सिपल डॉक्टर निशित श्रीवास्तव सर. मी निशित श्रीवास्तव सरांचा अनुभव खूप मोठा आहे. ही हॅज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्युशन in hospitality industry. So let me introduce him in short. He is alumnus of IHM Lucknow. He's done his PhD in hospitality along with masters in mass communications and LLB. In 1986, he started working in hotel operations. That's so long back. He has been into industry since almost 30 years. So he has a huge experience, and in just 4 years he became general manager of the hotel. In 10 years he became vice president operations of a 500 room hotel. Then he shifted to education to contribute towards society. Then he was a principal of Hyderabad JB Institute of Hotel Management. Then he shifted to Delhi and established 2 hotel management institutes in NCR, Delhi. That's Banarasi Das Chandiwala IHM and FHRAI IHM. Then he served as Deputy Secretary General in FHRAI for 8 years. Then he took over as Principal of IHM Srinagar for 9 years, Principal of IHM Kolkata for 5 years. And now currently he is Principal IHM Dadar. So with this great huge experience, I think we are really lucky to have him here today to share his knowledge with us. So sir, thank you so much for taking out your valuable time for us. Now I would request our General Manager Shri Chandrasekhar Jaiswal ji to address all of us. सर्वांना नमस्कार. थँक यू माननीय व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज मॅडम आज मुंबईमध्ये नाही आहेत. ते काय कामानिमित्त दुसऱ्या ठिकाणी आहेत. त्यांना ते हे कार्यक्रमाचे म्हणजे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा होणार होता, पण आज मी आणि बुरुकर साहेब इथं आहोत आणि आम्ही हा कार्यक्रम पार पाडत आहोत. मी निशित सरांना अलीकडेच माझी ओळख झालेली आहे आणि निशित सर हे IHM मुंबईचे प्राचार्य असणे म्हणजेच हा मोठा प्रतिष्ठित अशी मोठी प्रतिष्ठित बाब आहे. त्याचं कारण असं की आज लीडिंग इन्स्टिट्यूट जो आहे नॅशनल काउन्सिल ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, तो लीडिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे IHM मुंबई आहे. असं बोललं जातं की IHM मुंबईमध्ये तुम्हाला एकदा तुम्हाला प्रवेश मिळाला की तुम्ही IIT मध्ये प्रवेश घेतलाय हॉटेल मॅनेजमेंटचा. सो इट इज कंपेअर्ड टू IIT मुंबई as far as hotel management is concerned. So sir is principal of that college. I remember one thing about sir. Although I didn't know him, I met him physically only for 3 months after honorable principal secretary. After honorable principal secretary had asked me to go to him, and we are now going to. Sir is going to help us in Solapur College, and sir is planning that maybe IHM Mumbai will have a rural branch at Solapur College. So this is going, and sir and me will be going together as soon as possible to Solapur. So sir, we would also, if you want to join, you can also join, and we'll go, all of us. The most important part of sir is that before 3-4 months, not before this, before 10 years, 6 years, 7 years, I was reading always, I keep reading a lot of newspapers, magazines. I came across the news of sir as becoming the principal of Institute of Skiing Gulmarg, and he was picked up by Honorable Prime Minister. Right? This is very important. He was made principal by Honorable Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi ji. So with that in mind, मी सरांना काय विनंती केली आहे, सर्व resort managers, we have big number of participants today. I have got
very nice people coming here. Mr. Hemant Chabra has joined us. Can you just go, please? Can you go to the list, complete list? We have got Hemant Chabra, sir. He's a big guy. Balchand Vara, Anil Gupta, sir, is back here. Dr. Francis Thomas is here. Thank you very much. HR College is completely, the team is here. You know, we have down Jayesh. Can you come down a little, please? Yeah, HR College. There, sir, around 200 people are watching you right now, and me. So if I'll have to be kept under control. So please come down. And MD ma'am is also here, right? No, who's that? That's us. Okay. And there are a lot of people. So what I mean to say is that we have people from other countries. Hemant, how are you, Hemant? Can you say hello to us? Hi, Hemant. Hemant, hello. are we audible to you? Hi. Hello, everybody. What an honor to have you, sir, all. And I'm very happy that this initiative has started regularly and are calling high profile and high quality people to add value to tourism in Maharashtra. Thank you so much. You look like a from the Midwest now with the cap. I can always take it out. No, don't do that. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Go ahead. May I request, Mansi, that was it. Vinis, sir is an authority on hotel management. That is what I can say to all of you. I request all the senior regional managers, and resort managers to carefully listen to him. त्यांनी एक शब्द वापरला आता 5 मिनिटापूर्वी आमचं डिस्कशन सुरू होतं सीओ साहेब आणि ऑल स्टाफ अँड ऑल आवर ऑडियन्सेस. सर हॅज यूज्ड द वर्ड कॉम्प्लेसेन्सी. यू शुड बी कॉम्प्लेसेंट. म्हणजे कॉम्प्लेसेंट म्हणजे जे होतंय ते आरामाने होतंय, राईट? होऊ द्या, राईट? वी आर हॅपी. आम्हाला कोणी टच करू शकत नाही. तशा प्रकारचं आपल्याला ॲटिट्यूड ठेवता येणार नाही. वी हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर इन हॉटेल मॅनेजमेंट. थँक यू, मानसी. You can go ahead with the next program. Sir, the platform is yours. Okay. मैं सभी जो लोग जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पे मेरी बात को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं. और जो टॉपिक है इस समय वर्ल्ड टूरिज्म डे जिसके ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं वो बेसिकली रीथिंकिंग हॉस्पिटैलिटी. जरूरत यह है कि व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी और हमें उसके ऊपर दोबारा सोच करने की क्यों जरूरत है. रीथिंकिंग, व्हाई रीथिंकिंग, दैट इज द मेजर इशू. क्योंकि कहीं ना कहीं हमने काम करने में एक अचीवमेंट किया. लास्ट 2 इयर्स कोविड की वजह से जो सिचुएशन आई, बहुत से लोगों की नौकरियां गई, बहुत से लोगों को रोजगार, लेकिन उसी में बहुत को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिली. इसलिए हमें एक रीथिंकिंग की जरूरत पड़ रही है कि हम रीथिंकिंग टूरिज्म के ऊपर बात करें. सो अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी तब नहीं शुरू होती जब हम होटल में पहुंचते हैं. हॉस्पिटैलिटी शुरू हो जाती है द मोमेंट वी स्टार्ट अवर जर्नी. हम जब घर से निकलते हैं, हाउ द टैक्सी पर्सन इज बिहेविंग. जब हम प्लान करते हैं उसी समय से वो शुरू हो जाता है कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे वापस आएंगे. ऑल दिस प्लानिंग इज पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी. बिकॉज आज की डेट में और स्पेशली पोस्ट कोविड सिचुएशन में जो हॉस्पिटैलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऐप बेस्ड हो गई हैं. और हम जब भी प्लान करते हैं सबसे पहले हम ऐप पे जाके, दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच हैज केम इनटू आवर एवरीडे लाइफ. सबसे पहले हम मेक माई ट्रिप पे जाके अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट देखते हैं या किसी और ऐप पे टिकट देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स देखते हैं. होटल्स के बजाय दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं जिन्होंने हमारे हॉस्पिटैलिटी को काफी थ्रेटन भी किया है. और एक प्राइवेट एकोमोडेशन मिक्स जो है वो भी बदल गया है. हम एयरबीएनबी पे रूम देख रहे होते हैं, हम एक कॉटेज लेने या प्राइवेट हाउस देखने की बात करते हैं, मिस्टर बीएनबी एंड ऑल अदर मेनी ऑप्शंस आर देयर. सो व्हाट हैपेंस कि हम होटल के बजाय दूसरी, तो हम सिर्फ कहें कि हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड टू होटल एंड जस्ट कंसंट्रेटेड, मतलब कि होटल पर ही सीमित है, ये बात आज की डेट में नहीं करती. इसीलिए हमें रीथिंकिंग करने की जरूरत पड़ गई है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम गेस्ट को कैसे खुश रखें. क्योंकि बहुत से होटल अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन सक्सेस की परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे मैटर करती है. किसी के लिए जो ओनर है उसके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो एक सक्सेस है, लेकिन गेस्ट के लिए
जो मैनेजर है, जो ऑपरेशन मैनेजर है, उसके लिए गेस्ट सेटिस्फाइड है और वो दोबारा हमारे होटल में आएगा, दैट इज अ सेटिस्फेक्शन एंड दैट इज द सक्सेस कि आई हैव 20 रिपीट कस्टमर्स आउट ऑफ 30. सो दैट सेटिस्फेक्शन एंड सक्सेस दोनों के लिए अलग अलग जगह रिपीट हो जाता है. तो इसीलिए जब हम रीथिंकिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें सोचना पड़ेगा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं. और इन्हीं इश्यूज को छोटा छोटा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमें अपने आप को, हम जैसे बात कर रहे होते हैं सॉफ्ट स्किल इन्हेंसमेंट की, जब भी कोई बात, हमें स्टाफ ट्रेन करना चाहिए, हमें स्टाफ ट्रेन करना चाहिए, स्टाफ ट्रेन नहीं है. मेनी अ टाइम्स एंड स्पेशली जो मैनेजर्स होते हैं कहते हैं हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है इसलिए सर्विस में रखें. बट मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से ज्यादा स्टाफ के मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है. जब स्टाफ किसी गेस्ट को तहे दिल से एक्सेप्ट करता है, आपके एयरपोर्ट पे आप उतरे किसी भी अनजान शहर में और वहां पे अगर टैक्सी ड्राइवर आपसे कहते हैं बात करता है और आपको आपके डेस्टिनेशन पे सीधे पहुंचा देता है, so you remember it, that is an experience and that is the hospitality starts from there. I just share one of my experience because first time when I went to Cornell University and I had to मतलब मैं उतरा कैनेडी एयरपोर्ट पे, तो जो ड्राइवर लेने आया था ही वाज अ पाकिस्तानी एंड ही took me to the hotel where कॉर्नेल स्टाफ ने मुझे रिसीव करना था. मैं उस होटल पे उतरा और टैक्सी से उतर के आए, मैंने अपना पर्स निकाला और पैसे देने लगा. ही इमीडिएटली आस्क्ड मी अंदर आइए अंदर आइए. सो आई वेंट बैक इन द टाइम. ही सेड कि आप न्यूयॉर्क में हैं, यहाँ पे उतर के अगर पैसे देंगे कोई भी आदमी आके पर्स छीन के भाग जाएगा, आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और आप परेशान हो जाएंगे. तो रिमेंबर कि आप जब तक न्यूयॉर्क में हैं तब तक कार के अंदर ही पैसे दीजिए. दिस इज द फर्स्ट लेसन आई लर्न. सो एज ए टैक्सी ड्राइवर आई ऑलवेज रिमेंबर कि उसने हमें एक नए शहर में एक चीज सिखाई एंड इट इज द सेटिस्फेक्शन लेवल. सो दैट ड्यूरिंग माई स्टे इन वन सिटी आई नो कि मुझे क्या फॉलो करना है. So this is the hospitality. We don't expect कि hospitality means luxury, क्योंकि जब हम होटल की बात करते हैं तो सबसे पहले लग्जरी आ जाती है और लोग उस लग्जरी को ही हॉस्पिटलिटी समझते हैं. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हॉस्पिटलिटी को लग्जरी के साथ न जोड़ के छोटी छोटी सर्विस है कि आप कोई भी गेस्ट आपके होटल में आया है और आप सीधे सिर्फ उसको रिसेप्शन पे खड़ा होकर बात कर रहा है और आप उसको वेलकम ड्रिंक या पानी ऑफर करते हैं, तो ये भी एक हॉस्पिटलिटी का पार्ट है जो कि बड़े होटल्स बहुत लग्जूरियसली करते हैं और छोटे होटल जनरली फॉरगेट कर जाते हैं. तो बड़े और छोटे की बात नहीं है, उसमें एक होटल इकोनॉमिक्स भी काम करती है और भी बहुत से फैक्टर काम करते हैं. लेकिन जब हम सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं तो ये छोटी चीज, ये सोच के चलिए कि जो चीज हमें चाहिए वही चाहिए. तो हॉस्पिटलिटी की सबसे बड़ी चीज है कि आप गेस्ट की जरूरत को पहले से एंटिसिपेट कर लें कि अगर कोई 1-1:30 बजे आ रहा है तो उसको रूम से ज्यादा बेसिक पानी और खाने की जरूरत है, सो दैट सेम कैन बी ऑफर्ड. सो व्हेन यू एंटिसिपेट द नीड इन एडवांस, आप उसकी जरूरत को पहले से सोच लें तो हॉस्पिटलिटी अपने आप आ जाएगी. उसके लिए बहुत बड़ा मैनेजर या होटल मैनेजर या वेटर या सिक्योरिटी गार्ड होने की जरूरत नहीं है. जरूरत हमारे दिल में होनी चाहिए. जैसे कि हम अपने घर में कोई शादी का फंक्शन कर रहे होते हैं, एक एक चीज प्लान करते हैं कि मेहमान आएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कितने बजे खाएंगे. तो आप ये सोच लीजिए कि जब आप होटल में रोज एक शादी कर रहे हैं अपनी बहन की, और उस हिसाब से गेस्ट को अगर सोचेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल गेस्ट का बढ़ जाएगा. और गेस्ट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा तो आपकी सक्सेस फाइनेंशियली एज वेल एज रिपीट कस्टमर बढ़ती जाएगी. थैंक यू हेमंत जी. बट व्हाट मैं ये कहना चाहता कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, हॉस्पिटलिटी ये हॉस्पिटलिटी वो, बट बेसिक हॉस्पिटलिटी इज समथिंग साफ. मैं अपनी ही बात करूं, व्हेन आई वाज corporate general manager for Country, I have got an opportunity to establish one hotel that was on highway. दिल्ली आगरा हाईवे के बीच में ठीक 100 किलोमीटर पे लैंड थी और उस पे ढेर सारा टूरिस्ट ट्रैफिक चलता था. तो ये हुआ कि ये होटल, और उस पे सबसे बड़ा होटल ITDC का था जो सबसे सक्सेसफुल था. होता क्या था कि
जब मुझे वो प्रोजेक्ट मिला करने के लिए, मैंने सिर्फ गेस्ट नीड को असेस किया कि अगर मैं टूरिस्ट हूँ और मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए आफ्टर 2 आवर्स जर्नी के बाद। तो ये रियलाइज किया कि 2 घंटे की जर्नी के बाद मुझे एक क्लीन टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी चाहिए। और तो व्हेन आई मेड द प्रोजेक्ट, उषा रेक्टिफायर वाज द कंपनी जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना था, वो करने लगे। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा है कि मुझे आप 40 लोगों के लिए बाथरूम बना के दीजिए एंड 60 लोगों के लिए रेस्टोरेंट बना के दीजिए। सो दे वर सरप्राइज कि इतना बड़ा बाथरूम क्यों कमी। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा कीजिए। एंड दैट टाइम बाथरूम not only urinal and WC, rather I made 3-4 shower cubicles also. जो प्रोजेक्ट 3 साल का ब्रेक इवन पॉइंट था वो 1 साल में हमने ब्रेक इवन कवर किया। क्यों? क्योंकि जितनी गाड़ियां उस रोड पे जाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लीन टॉयलेट, दे ऑल स्टार्टेड स्टॉपिंग देयर। दिल्ली से आगरा के लिए ब्रिटिश एयरवेज की कोच चलती थी। सारे ब्रिटिश एयरवेज मिली से रात भर की फ्लाइट करके आए हैं और वो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे नीड सम प्लेस टू हॉल्ट to refreshen up, and that became the major spot for all British Airways, all Lufthansa Airways. Delhi, Agra, Jaipur was a tri-sancted. So जब भी दिल्ली से चार्टर फ्लाइट भी आती थी, सारे गेस्ट वहीं पे। तो क्या है, अगर हमने गेस्ट की जरूरत को पहले से सोचा हुआ है और उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट किया है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा रहेगा। और जो चीज 3 साल में होनी थी वो 1 साल में। इट वॉज नॉट द फूड, इट वॉज द टॉयलेट, जस्ट अदर वे अराउंड। सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये स्टेटमेंट बहुत स्लोली और अच्छे से सबको समझाइए सर, कि गेस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपकी होटल बनाइए। आप जो बोला है उनके रिक्वायरमेंट सर, मेरी विनती आपसे, नहीं ये बहुत बड़ा हमारा विषय है। हाँ, क्योंकि अगर आप, मैं बिल्कुल सही बात बोलूंगा, अगर आप किसी रूरल एरिया में बना रहे हैं तो वहां पे जो गेस्ट जा रहा है वो रूरल लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। वहां पे आप 5 स्टार के सर्विसेज दे देंगे तो गेस्ट को रूरल और अर्बन में कोई फर्क ही नहीं है। तो ही इज गोइंग देयर फॉर व्हाट? ही इज गोइंग टू लिव दैट एनवायरनमेंट, and that's where we are. Yes sir. Yes, we have कहते हैं that I will take the questions later on certainly. And वही चीज जो है, मैंने बोला कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं। बेसिकली हमें स्किल देने के बजाय उन्हीं चीजों को जो वहां पे मौजूद हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं, उन्हीं में हॉस्पिटलिटी इनकलकेट किया जाए। उनको समझा जाए कि आप लोकल की तरह ही रहिए, जिससे कि यू गिव लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस टू दोज पीपल दोज हु आर कमिंग एज अ यू, राइट? सो दिस इज व्हाट। एंड अगेन मैंने बोला कि हम एक टूरिस्ट की तरह किसी शहर में जाते हैं तो हम क्या देखने जाते हैं? हम देखने जाते हैं वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, हम वो देखने जाते हैं वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी क्या क्या है, या वहाँ का कल्चर क्या है, या वहाँ का फूड क्या है। Or that's how we live that experience of that city, right? And that's where जब आप कहीं जाते हैं, you bring back the memories. अगर वहाँ पे होटल का स्टे बहुत अच्छा रहा, आपको खाना अच्छा मिला, you are very satisfied, and then you recommend that place कि नहीं यार तुम वहाँ जाना। Like I said कि for 10 years I was posted in Kashmir, and especially as sir mentioned कि I started मतलब skiing and mountaineering institute that was almost closed, which innovated. तो सर ने थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी का समय कर दिया। No, it was 2011, so it was another government. So I'm not talking about the government thing. I'm saying that we did it. तो it is, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं तो एज ए टूरिस्ट आप एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। और मैंने जो सर्विसेज प्लान की हैं वो उस जगह को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, ना आर्किटेक्चर में, ना फूड में, ना कल्चर में, ना बिहेवियर में। तो आप उस एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं करते, आप एक टूरिस्ट जगह महसूस नहीं करते कैमरे से। और आज के में कैमरा और मोबाइल कैमरे से आपने फोटो खींच ली, 4 जगह आ गए, और दैट इज योर एक्सपीरियंस। you don't recommend place to different कि नहीं यार वहाँ पे ये बहुत अच्छा था। और एक एग्जांपल दूंगा कि आज से 15 साल पहले राजस्थान में एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ, चौकीधानी। It became very popular because it was giving the experience of the rural Rajasthan. Slowly they converted themselves to hotel, but people still remember that experience which they were doing in the hotel. तो मेरा ये कहना है कि हम कहीं कहीं पे हमें लोकल कल्चर
लोकल क्विजीन एंड लोकल एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरी चीज सफाई, जैसे मैंने बोला कि गेस्ट सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज है सफाई। आपके पास बहुत अच्छा रूम है, कोने में बल्ब नहीं जल रहा है, बाथरूम में लीकेज है, तो यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन गेस्ट की, आप क्या कितनी लग्जरी रूम है उससे ज्यादा जितनी चीजें हैं वो कितनी वर्केबल हैं, कितनी साफ सुथरी हैं, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर करता है। देन केयरफुल एंड monitored use of technology, that is the point I want to bring कि हम आजकल बहुत टेक्नोस हैवी हैं, बट कहते हैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं होता है कि उन्होंने हिडन कैमरा से ये कर लिया, हिडन कैमरा से वो कर लिया, जबकि आपको सीसीटीवी होटल में सिक्योरिटी पर्पज से लगाना है। सो वेरी मॉनिटर्ड होना चाहिए हर चीज को कि गेस्ट की प्राइवेसी भी इंटैक्ट है, एज वेल एज सर्विस के हिसाब से आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी कवर होने चाहिए। तो सिक्योरिटी इज वन ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट। आप किसी होटल में रुके हैं और किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे गए हैं तो एक्सपीरियंस में सिक्योरिटी, बिकॉज चूंकि मैं 10 साल कश्मीर में रहा हूँ, मैं कहीं भी जाता था लोग मेरे से पहला सवाल ये पूछते थे कश्मीर ट्रेवल करने के लिए सेफ है। इवन टुडे पीपल आस्क, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कश्मीर फॉर टूरिस्ट इज ऑलवेज सेफ। तो जब मैं 10 साल कश्मीर में रह के आया हूं तो आज भी लोग पूछते हैं और आज भी मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं जरूर जाओ। लेकिन जो टूरिस्ट जाता है वो 3-4 जगह जाता है जो कि एडवर्टाइज्ड होती हैं। जब हम एक स्टेट टूरिज्म को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें एक नया डेस्टिनेशन और नए एक्सपीरियंस को सोचने की जरूरत है जहाँ पे वो कर सके। किसी भी नई जगह पे जाने के लिए, टूरिस्ट को भेजने के लिए सेफ्टी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर वन हैज टू थिंक। तो हम जब रीथिंकिंग टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म डे पे बात कर रहे हैं तो हमें एक बार अपने अंदर सोचना पड़ेगा, स्पेशली जो स्टाफ गेस्ट हाउसेस में काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं या ऑन में, कि हम गेस्ट को सेफ इन्वायरमेंट दे रहे हैं, क्या हम गेस्ट को साफ सुथरी जगह प्रदान कर रहे हैं, हाँ क्या हम उनको अच्छा खाना दे रहे हैं, और क्या हम उनको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो सारी जिंदगी के लिए याद रखें। क्योंकि वो सारी जिंदगी के लिए याद रखेंगे तो वो जरूर आएंगे। बिकॉज मैंने देखा है कि लोग 25 साल बाद आते हैं उस होटल में से ये करने के लिए कि मैं शादी के बाद हनीमून में यहाँ आया था तो मैं उसको दोबारा जीने के लिए आया हूँ, या मैं उस मेमोरी को याद करने, या 10 साल के बाद उस जगह आते हैं अब उन्हीं मेमोरीज को याद करने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों को, और इसमें सबसे बड़ी चीज है जो कि कोविड के समय थोड़ा सा हमें लॉस हुआ, दैट इज ह्यूमन टच। क्योंकि टेक्नोलॉजी का काफी प्रभाव हो गया। आज की डेट में चेक इन भी हम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, ऑल चेक इन इज बीइंग डन बाय टेक्नोलॉजी, रिजर्वेशन इज डन बाय टेक्नोलॉजी, सो लॉट्स ऑफ AI use is there, apps use is there, but what is missing is the human touch। और जब आपके घर में भी कोई मेहमान आता है और आप सिर्फ टेक्नोलॉजी से उसे खाना सर्व करें और बात ना करें, आप एक जगह व्हाट्सएप पे बैठ जाएं और गेस्ट एक जगह बैठा हो तो वो बाद में थोड़ी देर में सोचेगा मैं आया ही क्यों था। सो सेम थिंग, हमें इन होटल में वो जो एक ह्यूमन टच है, फीलिंग कि हम आई एम वेलकम्ड हियर बिकॉज पीपल आर हियर टू टॉक टू मी, शेयर माई फीलिंग्स एंड शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड गिविंग न्यू एक्सपीरियंस टू मी, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो मुझे लगता है कि जब हम रीथिंकिंग टूरिज्म और रीथिंकिंग हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ह्यूमन टच को याद रखना पड़ेगा। तो सब कुछ ऐप बेस्ड होते हुए भी हमें आना पड़ेगा। और इन सब चीजों में जो मैंने सबसे पहली बात सर ने मेंशन की थी, कॉम्प्लिसेंसी, क्या होता है कि हम रेगुलर बिजनेस आता रहता है तो हम सक्सेसफुल हो चुके थे, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है तो हम गेस्ट की ओर ध्यान देना कम कर देते हैं और रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, और सम टाइम गेस्ट फील चीटेड। तो उस एक्सपीरियंस को दूर करके ज्यादा से ज्यादा गेस्ट सेटिस्फेक्शन की ओर जाना चाहिए। और सेटिस्फेक्शन लेवल सबका अलग अलग होता है, जो जिस बैकग्राउंड से आया है वो उस हिसाब से, तो उसकी जरूरतों को समझ के मेक हिम योर गेस्ट। गेस्ट अतिथि देवो भव ऐसे नहीं कहा गया है, अतिथि देवो भव मतलब कि जो भी अतिथि है वो देव के समान है, ये तो पहले से है, लेकिन क्या हम उसको महसूस करा रहे हैं ये सोचने की जरूरत है। तो मैं ये सोचूंगा कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अगर वे सवाल पूछें और हम उनकी बात करें तो पता चलेगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस को अपने गेस्ट के एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव करें और रिपीट कस्टमर्स बनाएं। थैंक यू।
We'll not start from there. We'll start from the first question. Before that, let's make a sir has appealed everyone to ask questions. Then Please we'll start. raise hands and ask questions. That will be very, very important, especially the college students, those who are connected with us. Dr. Nishith sir believes in interaction more than just one way talks. Yes, sir. Yes. So I would request all of you. The forum is, very important people have joined. The who's who of tourism. So they should talk now. This is your forum for MTDC. A lot of people. Nikhil, there's the question. Yes, Nikhil, please ask question, and then after that we'll take chat box questions. Good morning, sir. Good morning. My name is Nikhil Randive. I am from MTDC HR माथेरान. सर जैसे कि मेरे कुछ सवाल है और कुछ आपसे सजेशन चाहता हूँ. जैसे कि आपने कहा कि हॉस्पिटैलिटी जैसे गेस्ट घर से निकलते हैं तब से शुरू हो जाती है. जैसे हम माथेरान में तो लोग यहाँ से आने के लिए टैक्सी करते हैं, तो टैक्सी वालों की मोनोपोली होती है या उनसे कुछ हैरेसमेंट होती है, तो वही माइंडसेट लेके गेस्ट थोड़ा चिड़ा हुआ होटल में आता है, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए उसके बारे में सजेशन है. और जैसे कि आपने बाद में कहा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ह्यूमन टच आपने बढ़ाने के लिए या पर्सनल रिलेशन स्टाफ कैसे बढ़ाए, उसको इनिशिएट कैसे करे, इसके बारे में आप कुछ सजेस्ट करोगे तो प्लीज सर. सबसे पहली चीज मैं टैक्सी वाले की बात करता हूँ आपसे कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब वो टैक्सी वाला थोड़ा सा निगोशिएट करके आता है या दूसरे रास्ते से घुमा के आता है, गेस्ट को लगता है कि उसने मुझे चीट कर दिया और वो दिमाग में इस बात को लेके चलता है. और इसीलिए बहुत से लोग जो हैं अब ऐप बेस्ड टैक्सीज की ओर ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं देन ट्रेवल एजेंट्स और के थ्रू टैक्सी बुक करने में. दैट इज़ द रीज़न. और लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टैक्सी वाला ऐसा होता है. तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो टैक्सी यूनियंस के साथ बात करके हम टैक्सी वालों की कहते हैं, स्पेशली जो माथेरान और मुंबई बेस पे चल रहे हैं, हम उन टैक्सी वालों का 1 डे और 2 डे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर सकते हैं. हम उनको गाइड कर सकते हैं कि हाउ यू बिहेव. नंबर 2, जो टैक्सी के रेट्स हैं अगर वो पब्लिसाइज्ड हैं, पब्लिश्ड हैं, लोगों के नॉलेज में हैं, then people will know that this costs with this much and accordingly they plan, so they will never feel cheated. Like आप ऐप बेस पे जाते हैं तो आपको बुक करने से पहले मिल जाता है कि इतना रुपया लेगा. जो देयर इज सर्जिंग प्राइस, कभी वो 600 रुपया है तो कभी 1800 रुपया है सर्जिंग प्राइस पे. लेकिन इफ टैक्सी एसोसिएशन with tourism department and it is there. मैं लेह की बात करूंगा. लेह में आप बस स्टैंड पे उतरे, वहां पे बकायदा बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा है A क्लास होटल टैरिफ बिटवीन दिस टू दिस, B क्लास होटल टैरिफ बिटवीन दिस टू दिस, C क्लास होटल टैरिफ बिटवीन दिस टू दिस. सो गेस्ट अपनी पॉकेट के हिसाब से उस होटल को चुन ले. तो यहाँ पे आपकी बात सही है कि डिपार्टमेंट, इट इज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिससे गेस्ट को एक बेटर सेटिस्फेक्शन मिले. ये टैक्सी वालों को लेके सिर्फ माथेरान और मुंबई की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाएं, आपको हमेशा ये लगेगा कि बिकॉज वो कहते कुछ है और बाद में उतरने के बाद कुछ और चार्ज करने लगते हैं. तो उनका सेंसिटाइजेशन एंड इसीलिए बहुत से स्टेट में टूरिस्ट पुलिस भी बनाई गई है, जो कि वो गेस्ट की हेल्प के लिए टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पे बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड शुरू होता है या जहाँ खत्म होता है, वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस इज देयर टू हेल्प द टूरिस्ट. सो इट इज क्योंकि हम इंडिविजुअली, मैं और आप, हम टूरिस्ट वालों को या जो गुड ट्रेवल एजेंट्स हैं हम उनसे बात कर सकते हैं, पर इट कैन बी अ कंसोलिडेटेड एफर्ट बाय 2-3 डिपार्टमेंट्स विच कैन टेक. तो मैं ये कह सकता हूँ. दूसरी चीज, जो आपके रेगुलर टैक्सी वाले हैं उनसे आप जरूर बात करें, उनको सेंसिटाइज करें कि आप हमारे गेस्ट को ये करें, मतलब अच्छा सेटिस्फेक्शन सर्विस, जैसे कि हमारी सर्विस स्टैंडर्ड बढ़े. ठीक है निखिल जी? हेलो सर. हाँ, और आपका दूसरा सवाल क्या था निखिल? सर ह्यूमन टच के बारे में आपने बात की. ह्यूमन टच एक मिनट. तो ह्यूमन टच लाइक आपके यहाँ रूम सर्विस में वेटर रूम सर्व करने जा रहे हैं, राइट?
अगर कहते जो सर्विस है वो एक है ये कि रूम में गया ट्रे छोड़ के आ गया, और दूसरा है रूम में गया उसने कैसे पूछा कि सर एनीथिंग मोर, लाइक जस्ट सिंपल वाटर का जो जग रखा है वो ट्रे के साथ रख दिया और टेबल पे उसने खाना सेट कर दिया. इट विल टेक ओनली 2 minutes बट गेस्ट विल फील कि ही हैज बीन टेकन केयर ऑफ. सो ये बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो कि आप हाउस कीपिंग का लड़का या उसने पूरा रूम वगैरह क्लीन किया, लेकिन कहते हैं वो गेस्ट की एब्सेंस में जनरली होता है. जब गेस्ट इज देयर और आप इवनिंग सर्विस के लिए जाते हैं तो जो भी हाउस सुपरवाइजर है या मैनेजर है एक बार फोन करके भी गेस्ट से बात कर ले तो उसको लगता है यस आई एम बीइंग आस्क्ड. बहुत सी जगह जो छोटे होटल्स हैं वो दिन में एक ही बार क्लीनिंग करते हैं क्योंकि उनका जनरली स्टाफ कम रहता है, वो होटल इकोनॉमिक्स से अलग से काम करती है, उसके ऊपर हम अलग बात कर सकते हैं. लेकिन मैनेजर का गेस्ट से बात करना सबसे बड़ा टच होता है. लेकिन मैनेजर तो पीछे होता है, सबसे बड़े स्टाफ जो हमारे होते हैं जो गेस्ट के टच में होते हैं, वेटर होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, गेटमैन होता है. दे स्माइल इज द बेस्ट थिंग टू कनेक्ट, दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2, इफ यू आस्क सिंपल कि हाउ वाज योर डे सर, और आपका दिन कैसा रहा, आप कहाँ कहाँ घूमे, छोटी सी बात, स्टिल गेस्ट फील सेटिस्फाइड कि ही इज बीइंग टेकन ऑफ. दैट इज वेयर द ह्यूमन टच. आपके में घर में भी कोई गेस्ट आता है, आप उससे ये पूछते हैं कि भाई तुम सारा दिन तुम्हारा कैसा रहा, वो कहे नहीं है बोर था, बस इतना ही बोले, लेकिन एक लगता है कि यस समबडी आस्क्ड. तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट टूल. इट रिमूव्स द blockage between guest and service, and that is where I said human touch. Yes. Sir, Dr. Nishith sir, there is one comment in the comment box from in the chat box from Mr. Hemant Chabria, and he says Hemant sir is saying that human touch. That is what Hemant is saying. Human touch is what we have forgotten. Touch is, we are known for our hugs. I am not saying we all should start hugging. That's true. कहते हैं, but hugging is not important. Yeah. The communication is important. You yeah. make people realize that you are wanted, Yes. you are desired, and you are welcome. That is very, very important by our own words. Sir, we will come back to Hemant sir later on. We'll ask questions because Hemant Yes. sir is an encyclopedia. He's an encyclopedia. No, that's why he is saying कि human touch means I'm not talking about physical touch. I'm talking about feelings. So Hemant sir is the person who is a copy of the book, the character of the book, the monk who sold the Ferrari. I see. Right. And thank you, Hemant sir. He is Such from a very big family, a very big family in Mumbai, one of the richest families of Mumbai. He left the whole thing, went into the jungle, took a farm, and he stays in the farm from last 20 years. Yes, lovely. I envy you. हेलो. हाँ जयपाल जी. हाँ वाईटी साहब नमस्ते. हाँ नमस्ते सर. आई एम पपेंद्र पाल सिंह वाईटी फ्रॉम अजंता. यस सर. जैसा आपने कहा सिर्फ हॉस्पिटलिटी सिर्फ होटल वालों के लिए ही सीमित नहीं है, इसके अंदर टैक्सी ड्राइवर स्थानीय लोग भी आते हैं. तो मेरी ऐसी विनती रहेंगी एमटीडीसी से, जहाँ जहाँ उनके पर्यटन केंद्र है महाराष्ट्र में, वहाँ के लोकल लोगों को टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, इनका सबका वर्कशॉप करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आने वाले मेहमानों से हम उनका अवगत किस तरह करें. अतिथि देवो भव. जी बिल्कुल सही बात कही आपने. इसी को मैंने सेंसिटाइजेशन कहा था, और मैंने अभी थोड़ी जसवाल साहब से थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें एरिया स्पेसिफिक सेंसिटाइजेशन करना चाहिए. इट इज नॉट कि एक जनरल हो जाए, क्योंकि हर जगह का एक अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग नीड है. तो वो लोगों को हमें उस हिसाब से करना. नॉट ओनली टैक्सी ड्राइवर सर, सिवेनियर शॉप ओनर्स ऑल्सो, क्योंकि वहां पे समटाइम आपको लगता है कि प्राइस एग्जॉर्बिटेंटली हाई करके बताया गया है, देन यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग एंड देन यू डोंट बाय. वन ऑफ माय बॉस अमिताभ कांत जी, ही ऑलवेज सेड कि wherever you go, you always buy a product. How small, how big, it doesn't make a difference. But when a tourist destination you go, you buy a product, you create lots of employment generation. कि वो उसने गांव में बनाया है, घर में बनाया है, शॉप पे आया है, तो लॉजिस्टिक्स है, मैन्युफैक्चरर मतलब कि आर्टिसन है, लॉजिस्टिक्स है, शॉपकीपर की वो है. तो स्मॉल सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू फॉर द लोकल एरिया. और वहां पे सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है कि टूरिस्ट सिर्फ घूमने के लिए नहीं आया है, वो एक्सपीरियंस के लिए आया है.
और वो जरूर मैं जयसवाल साहब से भी कहूंगा और मैं भी उसका पार्ट बनना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जैसे आप होटल वाले हैं, आप अपने एरिया में ऑर्गेनाइज कीजिए और हम सब मिलके, बिकॉज वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स, सो वी हैव टू वर्क टुगेदर. It cannot be only the government. Its private participation is equally important. Oh, thank you, sir. Thank you. Thank sir. you very much, Mr. YT. Any another question, please? Any other question? Yes. Sir, I would like to ask. You please introduce yourself. Hello, sir. My name is Siddesh. I'm working in Holiday Resort Kunkeshwar, MTDC's Holiday Resort Kunkeshwar. Sir, I would like to ask you that in this digital era, do you think there are less opportunity in tourism and hospitality industry due to digitalization? See, I already addressed this issue of technological intervention and AI-based interactions and in this digitalization era, you can market yourself very well as you have the pre-reservation, so you can plan what guest is coming. So all this is there. Lekin, as I said, this is one of the support system. Your major system is your contact. Like आपका सारा रिजर्वेशन ऑनलाइन है, you have the confirm booking, you have got the payment, everything. आपके होटल से सिर्फ एक कॉल गेस्ट को चली जाए कि सर आप कितने बजे पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं तो आपको क्या क्या जरूरत है, या इतने में ही उसका क्या मैं आपके लिए टैक्सी अरेंज कर दूं, दो इट विल बी पेड फॉर यू बट विल इट बी हेल्पफुल. तो इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं, वो द डिजिटल एरा इज देयर. एवरीथिंग इज ऑन I say artificial intelligence and app based. We all are utilizing these services, but this human touch I'm talking about, which is based on the communication and connection. The moment one call you connect with the guest, he feels that he is coming and he'll be one of the happy customers that is coming. Sir. Hello. Yes, Siddharth, I think I addressed your issue. Sir, another question. For marketing, digitalization is very important, but satisfaction, human touch is equally important. Sir, one more question. Sir, after pandemic, how would you describe the job opportunity in tourism and hospitality industry? Can you please tell us? Sure. Yeah, after pandemic, if you see during the pandemic also, many of the city hotels, I'll say differentiate, city hotels had to close themselves and the business shifted to the resort hotels. Because during that period, I was in Kolkata. The Kolkata city hotels were closed, or the COVID centers hotels, but that Darjeeling, Siliguri, Digha, the hotels were fully booked and they were charging almost triple than the regular tariff. So opportunities were always there. One of the hotel told me, okay, COVID came as an opportunity to me because I got this opportunity to get rid of all the dead woods. जितने भी उनके डेड वुड्स थे उन्होंने हटा दिए and now they are creating and as per requirement which we are receiving in the institute from all the hotels, it is every hotel is aspiring to have more and more staff because they reduced their staff strength during the COVID. So the job opportunity has increased, but apart from that, many avenues also came in. People started cloud kitchens, people started take home services. Lots of app-based services came in during this period, and COVID, if you see one way, it certainly hit us hard, but on the other way, it created so many other options and opportunities which we actually never thought of. It exists. So job opportunities के लिए मैं ये बोलूँगा, job there is a big difference, job and career. अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपने लिए कैरियर ढूंढ रहे हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो वहीं पे कॉम्प्लिसेंसी आती है, या मुझे जॉब मिल गई अब मैं सेटिस्फाइड हूं, अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा. लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कैरियर, यू ऑलवेज लुक फॉर सम इनोवेशन एंड सम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो. तो अगर आपका क्वेश्चन जॉब से था, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लॉट्स ऑफ होटल्स आर अप्रोचिंग फॉर आईटी एंड एंट्री लेवल जॉब्स. लेकिन जहां पे कैरियर की बात है, वहां पे इंडिविजुअल को खुद एफोर्ड करके नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा. दैट इज दैट. Anybody else? Thank you, Siddharth. Siddharth, हाँ, thank you. Siddharth. Thank you, sir. Thank you. फिर हम अब चैट बॉक्स वाले ले लेते हैं. We can start with chat box and the other
It's hard to chat. I was expecting more questions from They will students, come, sir. They will come. students of colleges. Hemant, you can start. Sir. Hemant, you start your encyclopedia. You are unmute yourself. Hemant, unmute yourself. Good afternoon, sir, and good afternoon to everybody. I'm really happy to have met you, and I will come personally and meet you. See, I have been really eyeing this college because I think it's the best college in India. And I have Michael Swami and other chefs who have passed out from this college. And I want the tribals of our area, because I've done some social project like the Bicycle Project India, and a lot of schools call me for mentoring the children for what career to take. And I thought, go to the best. And since this college is the best, and you said that you do give admission to tribals, so I will be personally contacting you. And if you could help us with admissions and the systems, and then we could find accommodation, because the tribals are really from hamlets. If you go to Jawar Mokhada, they are very naive. So to come into a city like Bombay is enough of a burst for them. So we'll have to sensitize and make a space for them. So I just Okay, want sir. your support on that. Sir, Kate, I would like to tell you something. When I was in Kashmir, there is SOS Herman. They always train lots of tribal and orphan people, and they used to sponsor 5 students to IHM Srinagar. The similar in IHM Kolkata also, and we have 15% reservation for ST candidates for the scheduled tribes. Though they have to go through the admission process, admission test, which takes place with NTA. But if you tell the students in advance, we can always depute somebody to guide them how to appear for the test and prepare them for the test so that they get seat all over India. And for SC, ST students, there are lots of scholarships also from the social welfare department. So they need not to pay fees because their fees is after first semester, all the fees is sponsored by this department and they pay the fee. So and lots of means city. I am not very sure about Mumbai. I have to find out because I am very new to the city. But all other city has the special hostels for SC, ST candidates or students. We also have a point, but we don't have a very limited infrastructure. But we can certainly train them, guide them, and opportunity can be provided to them. That is what we can promise. Send one person to your locality only to train the students then and there, so that because Government of India has another program that is called Hunar Se Rozgar Tak, and for that I won many awards because in JNK I trained almost 6,000 people under Hunar Se Rozgar Tak scheme, and 5 times I won continuously award from the Government of India for this. In that, we go to the small villages, train the people there, and arrange job opportunities for them. Since Kashmir, maximum people wanted to go Gulf, and I can very proudly say that almost 4,000 people are working in Gulf countries, in especially in Makkah. So from my side, we are all open to help you to develop the tribal area of that place. That's I can promise. Thank you, sir. Hemant, you have something to say? Deepest gratitude, sir. Wonderful. So you got दो काम करके ले लिया आपने. और मैंने आपको सर आपको अपना email ID भी भेज दिया और मेरा number भी भेज दिया. Since you're new in Bombay, whenever Yes, you're sir. ready, I am offering my space for the tribals and Yes, an orientation to come and stay, or your staff, whoever. It'll be an honor to have you and or your team or your representative. And I am connected with the tribals because I've been working with many schools in my district because of the bicycle project. And I honestly think that they are very shy and very reserved, or on the very back foot to come to the best college in India. So, I will add it. It is not the best college. It is one of the first college in South Asia. Because thank you. in Sir. 1952, hospitality education started from this college,
Mrs. Leelavati Munshi, who was wife of that agriculture minister, Mr. K. Munshi, she initiated the vision of this college was to provide nutritious food to the people of India, because हमारी जितनी भी staple diet है, it is all grain based. We don't use nutrition. हम vegetables का इस्तेमाल कम से कम करते हैं. तो उस समय 1952 में यह कंसीव किया गया कि हम दूसरों को न्यूट्रिशन डाइट कैसे दें. उसके लिए एक योजना शुरू हुई, अन्नपूर्णा, और इट वाज फंडेड बाय यूएन. और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये 11-15 बच्चे ट्रेन किए जाते थे, जो कि उनको वो जगह जगह जाए. तो दैट्स हाउ दिस. और आज भी कॉलेज इतना बड़ा हो गया, पर जहां तक मैं समझता हूँ कि अभी भी हम इस विजन को अचीव नहीं कर पाए हैं कि हम न्यूट्रिशियस फूड लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाए. तो सिंस आप ट्राइबल एरिया में हैं, हम उनके फूड को देख के, क्योंकि ट्राइबल एरिया फूड इज मोर न्यूट्रिशियस फूड, वेयर एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहुत से लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और उसी को हम कॉपी कर रहे हैं वेगन के नाम पे और ऑर्गेनिक फूड के नाम पे, और एग्जॉर्बिटेंटली मार्केट कर रहे हैं. So I think we have lots of common, and we can do wonders if we come together. That's what I feel. Yes, sir. I'm really happy, and that you have worked with the people in Kashmir in such scale, because if you know, Maharashtra mein Palghar is the biggest tribal district, and we are just 2 hours from Bombay. Sure. Thank you, sir. Thank you. Hemantji, just wanted to add, sir, I wanted to ask you. You are talking about 1952, this college of IHM Mumbai, and the state of Maharashtra was formed in 1960. So this is before that. And so, most important, was this called as the Churchgate Women's College? No, it was at Andheri, Vishwa Bharati University. Achha. It started from the out house of that university. So, and then later on shifted to this Dadar, where it is now. So we have one raised hand. Yeah, sure. Raj Patil, please. Sir, good morning, sir. Good morning, all of you. Doctor, sir, I was very inspired about saying that human touch is very important. So I've just restored my landline number. I'm running restaurant near Ajanta Caves. The restaurant name is Foothill Restaurant. So one day I've received call, sir, can we get the milk in the restaurant? We are at the viewpoint. So I just said, ma'am, please come down and we'll have a hot milk here for, they may be asking for the baby. They came here, we provide them milk, and they asked me how much I'll pay her. So I said, if this baby is satisfied, then you will pay me. निमृतिक एक मिनट राज एक मिनट निमृतिक कांबळे मैडम जरा अनम्यूट. हाँ ठीक है, ओके राज, यू कंटिन्यू. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू आर टॉकिंग राज, वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर. सो वो नीचे उतर आए सर, उन्होंने दूध पिया बच्चे को. मैंने उनको पूछा कि सर दूध का क्वालिटी कैसा था हमारा, तो उन्होंने पूछा कि पहले तो ये पैकेट वाला दूध है नहीं ना. तो हमने उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि सर ये पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी नहीं है. वी आर इन रूरल एरिया, वी take milk from the farmers, and the dairy is purely we take milk from the farmers. तो उन्होंने इतना अच्छे से कहा कि सर we travel from Aurangabad to Ajanta Caves, we asked 2-3 hotels, they have a packet milk only, but we are truly satisfied we got the pure milk here. So this is a good thing for us, sir. Yes, sir. Raj, thank you very much. And Raj, in fact, you should remind the whole team of resort operations and head office, and also your regional manager. Baby food is very important. We neglect food. We neglect 3 food, and one is baby food. The second food is for senior citizens. We have food, and then the third most important is food for the disabled. Yes, sir. This is very, very important. You have touched a very significant topic. We'll talk about it in a later period. Most of our resort managers, we are proud of them that they are catering to all the babies. There are people who come to the restaurant with the mothers come to the restaurant. They want, this children to be feeding this milk. But, our MTDC, I'm sure it is not available in even a 5-star hotel. They may do it with money, but we do it with human touch, as you said. Yes, sir. Thank you so much. Definitely, sir. Human touch is more important, sir. Thank Very you. nice.
Thank you. Sir, and Raj sir, कहते हैं the same guest, if you call and guest must be calling to you कि next time मैं कब हूँ. बराबर, बढ़िया है. Yes, So sir. Yes, that sir. is- So that is a repeat customer, and that's your success. That's what I was. Yes, sir. Yes, sir. Yes. It is not Thank the you, money thank you. is the success. The customer Sir, is the sir. राज मला Customer- तुला एक सांगायचं राज. Sir, सर sir. एक बोलतो हूं. एक मला सहज एक रेफरन्स आलाय माझ्या डोक्यात की एक आपल्याकडे न्यूजपेपर होता, अत्यंत मोठा वर्तमानपत्र आहे महाराष्ट्रात. त्या वर्तमानपत्रांनी त्यांच्या सिनियर सिटीजनसाठी एक पान, तो फॉन्ट जो आहे ना, फॉन्ट, जी सर, जी. तो फॉन्ट मोठा करून टाकलाय, म्हणजे Wow. जेणेकरून Amazing. यांना विदाउट चष्मा त्यांना वाचता येईल. वाचता येईल पाहिजे. Yes, आपल्या yes, अशा absolutely. प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. जी, And we'll जी. do it. Amazing. Amazing, sir. We'll do it, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Nishith, sir. And sir, Thank please you. visit Ajanta Caves once. Yeah, please come to Ajanta. Sure, sure. I have been there. Yeah. Chat box, please go to the chat box now. From starting. Ajanta Ellora, I went when Anybody has question can raise their hands, please. Okay. Yeah. Then yeah. Let's next. कितनी झूठी तारीफ. ठीक है. Does your college have accommodation for tribal students? तो वो तभी एड्रेस कर दिया, हेमंत जी का क्वेश्चन था. हाँ. Does your college have accommodation for tribal students? That is okay. Next. We'll take all questions. Okay. Human touch is what we forgotten. That's okay. Next, Yes, please. okay. I would like to share experience of construction of IISM Gulmarg if time permits. Yes, sir. Can you do that now? Because I think Sir Anil Gupta sahab is known to you. Yes. Mr. Anil Gupta, please. Sir, we can give you 2 minutes, please, if you don't mind. Yeah, I know this subject is totally different than what I am going to speak. So, the speaker has talked about tourism a lot, and 3-4 things which has touched me really, because I was very much associated, like Kosi restaurant he touched on the way of Agra. He touched Amitabh Khan Sahab, with whom I have worked very closely. He's really a guru, and perhaps everyone knows that Incredible India is a name given by him. Yeah. And third, he talked about the IISM. This IISM was started, the construction was started in 1988, and I was associated with this project. Unfortunately, that faced the terrorist problems over there, and the work was stopped in the middle of it. And that time, its structure was more or less complete. Then we recouped this project in 2000. And that by that time, this had suffered a lot. We got the structure test done again through IIT, and then whatever was to be demolished, we demolished, and we started the work again, completed in 2001-2. And there was a lot of, the pilferage was too much during that terrorism period. And we faced, I can't explain the problems of that time, and even after that. तो उसमें जो हमारा जो एक जो बहुत अच्छी चीज मैं आपको इस बारे में शेयर करना शायद सभी को नहीं मालूम होगी, इसका जो आर्किटेक्चरल व्यू था, that got the international best building award. Yes. Okay, and the architect was Mr. Rajiv Gupta. Unfortunately, he's a good friend of mine, but unfortunately we have lost him about 2 years ago. A wonderful personality and a keen person to go for the best of the architect at any cost. There is no profit or in losses. But when we completed this, there was some lots of queries, because there was a lot of escalation which has taken place when we started the project and he completed the project. So there are lots of queries in the ministry as well as in my own department, ITDC. So in one of the meetings, I remember Mr. Amitabh Khan was taking that meeting, and he, at times he used to be, since you have also worked with him closely, so at times he used to use very different words. So उस समय उन्होंने कहा था, अरे तुम लोगों को पता है ना IISM में इन लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों को तो वहां पे जा करके डैश. तो उन्होंने जब कहा था तो मतलब हम लोगों को भी लगा कि yes, he is the man who can admire the good work of the people.
So it's good that you have worked over there for 10 years. You know, actually, I was given to revive because when I joined in 2007, the tourism was on the peak. Right. And you can understand that ITDC hotel is half structured, and this was almost covered in 14 feet snow. Yeah, So yeah. to run the program, I used my students. They used to first on gas बर्फ को पिघला के पानी बनाते थे. उस पानी को हम अंदर डाल के अंदर की बर्फ पिघलाते थे और तब जाके हमने पूरा बिल्डिंग खाली किया, बिकॉज पूरी बिल्डिंग में फुट बर्फ जमी हुई थी. So that's how we did it, and it takes almost 4 months to clean the building only. So Yes. that is a real experience, and I really enjoyed. And today it is when many people don't know that ISM is running a free program. I say free because skiing program for everybody it costs 50,000, but he can book this program on Government of India website for 10,000. For 15 days program, boarding, lodging, pickup from airport, dropping up to airport. It is totally from Government of India, and fee is only 10,000 rupees, where the cost is staying in Gulmarg itself is 50,000. So Yes. many people are not aware about this, and they don't take opportunity. So I thought, Gupta ji, you must promote IISM for skiing. But here we are talking about different topics, so I have not touched that. So Right. otherwise we will deviate from this place. Thank you, Gupta Saab. By the way, I just wanted to tell ki Gupta Saab is also the sound and light expert of India. Oh, great. He's the Thank sound you. and light expert of India. Please mind my words. And he has done many ITDC projects have been done only by Gupta Saab. Thank you, Gupta Thank Saab. you, sir. And we have a next question. Do we have any other question from MPDC people? Outsiders, students of college are not talking anything. I think they are left for their lectures. What is this, please? No. Yeah. कोई नया question नहीं है, sir. So we can say thank you. We are well within the time. Yeah. Okay. I think we had a very interactive session, and I am always available when you have any query, and Jaswal sir is always there to help you out with this. Sir, please, can we do how many? Please, this question can we take? This is So who is this? Suyog Pawar. Suyog Pawar. Sirji, how would you suggest job opportunities with more upcoming hotel management colleges and pass out students? Do you think we will have a stagnant point? Who is that? Stagnant point as current pass outs. Sorry, sir. Very good. बोला ना सुयोग. सुयोग बोला. प्रश्न विचारा. नहीं sir. Sorry. नहीं चांगला है प्रश्न. अरे कोई बात नहीं, आप बोलो सवाल क्या सर जी. How would you suggest opportunity with more and more upcoming hotel management colleges and pass out assessment? Do you think we will hit the stringent point at the current? See, आपके क्वेश्चन का सवाल मैं जवाब से इतना दे सकता हूँ कि there is no barrier. अगर आप कहते हैं कि stringent point कौन सा है या क्या मुझे रोकता है, वो सिर्फ आपके अपने सोच का है. अगर हम उस सोच को दूर करें, आप अपने सोच को अगर हटा दें, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर मैं ऐसे बात करूं तो वाव मोमो, इफ यू सी दे आर पास आउट ऑफ IIM. मैक्सिमम IIM जो है वो कहते हैं आपका स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो रहा होता है इंस्टेड ऑफ जॉब. तो मेरा यह कहना है, अगर आप अपने अंदर की इनहिबिशंस को हटा दें, माइंडसेट क्लियर कर लें, यू आर रेडी टू ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब, एडॉप्ट एंड परफॉर्म. Nothing can stop you. So किसी भी सिचुएशन में पहले आप जब जाते हैं उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसके माहौल को एडॉप्ट कीजिए, उसके बाद परफॉर्मेंस को दिखाइए और यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल. हर जगह अपने आप कहते हैं हम सोचे कि हमें सीधे ही कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, तो वो नहीं होता. एवरीबडी, अगर एक एडवोकेट भी है तो उसको अपने जूनियर सीनियर के बैग्स को उठाने पड़ते हैं. अगर आप डॉक्टर भी हैं तो पहले आप जूनियर डॉक्टर होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं और सीनियर्स की बात सुननी पड़े. तो सक्सेस इज टोटली अप टू यू. सो रिमूव एनी इनहिबिशंस फ्रॉम माइंड and start performing. Your success is with you. There is no job, lack of job all over place. Hoteliers are saying we are not getting staff and we are looking for the staff,
But what is the problem? Everybody wants to work in metro city or A-class city. Nobody wants to go and work in a smaller city or a smaller project, whereas the opportunities are equal at both the places. So you have to think what exactly you are looking for and where you want to grow. Thank you. Thank you. Thank you, Sujal. Thank you, sir. Any other question or we close it now? Okay, Mansi, we can close it. If you have questions, you can say. Sir, HR College says, thanks a lot for the wonderful session. There are a lot of people. Thank you, HR College. Thank you. And Faisal sir, next. Sir, thank you so much. You have actually touched the crucial aspects of hospitality and tourism. Initially, you said hospitality starts with journey and not just hotel. Yes, that is very important for everybody here to know that it is not only the product which starts at after reaching the accommodation unit or after reaching the hotel. It starts right from the beginning. And here is somewhere rethinking is required. Yes, the perception of success, it is very relevant to the hotel owners, maybe relevant to the staff, its relevance from the guest perspective, like it changes. And everybody needs to be, needs to achieve that from all perspectives. Then yes, the staff training is just not enough. Motivation and involvement of the staff, that is something which we really need to consider. Then hospitality, yes, it's not just a luxury, it's not something that is just glamorous. It requires a lot of efforts. That human touch you said is, yes sir, it's very, very important. Anticipating guest needs in advance, that is what we need to actually consider. So then, and after all, sir, you said that the guest, we need to make the guest feel that they are important. So that is something which lies at the core of the entire services what we provide, sir. Thank you so much. You have really given us like all valuable inputs, and thank you so much. Thank you. Thank you everybody listening to me patiently. Thank you. All senior managers, regional managers, all resort managers, all college students, all delegates from the industry, thank you so much for taking out your time and attending this session today. Thank you so much. A lot of people have come, sir. Mr. Papinder Silvaiti, Mr. Ali Gupta, HR College, Guru Nanak College, we had Jai Hind College people. Then we had college, there was a surprise in the last, I could see Mr. Shatrughan Bhore. This is a rural tourism college, sir. One of the first rural colleges of India. So he can, he's really there. Like, and he's on the chat box now. He has written something on the chat box. I don't know what he has written. He says, Mr. Bhore says, Shatrughan, Dr. Bhore Shatrughan, to everyone, very nice. Thank you for the lovely session. Regards, Varun Rao. Oh, Varun is the owner of Tourist Home, one of the first holiday homes of Maharashtra. Oh, that's great, Varunji. Almost before 80 years. So his great grandfather, and then his father, and now he. Thank you, Varun, for joining. Thank you, everybody. Thank you all for joining. Thank you. And